चलिए तो मैं आज आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आप जेडब्ल्यू मेंस, नीट, ये जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, इनफैक्ट अगर आप 11th या 12th क्लास में भी हैं और अगर आपको तैयारी करनी है अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे उसको तैयारी कर सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि ऐसी तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, तो फिर इसमें क्या खास है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है, ये आपको एक होम ट्यूटर प्रोवाइड करता है। मतलब होम ट्यूटर कैसा होता है कि अगर वो आपके घर पे आएगा तो वो सिर्फ आपके ऊपर ही फोकस करेगा और वो सिर्फ आपके ही डाउट्स लेगा, उससे आप डाउट्स पूछने में कभी भी हेजिटेट नहीं करोगे। तो ये उस तरीके से आपको सिखा रही है, और इस तरह की कोई वेबसाइट मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जिस्ट करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। जैसे मैंने अभी अपने लिए कोर्स बनाया इंटीग्रेशन 1। अच्छा, यहाँ पे आप अपने लिए भी कोर्स बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि आप अपने लिए कोर्स कैसे बना सकते हो। लेकिन फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एक गेमिफाई वे में और किस तरह से इंटरेस्टिंग वे में ये वेबसाइट मुझे सिखाती है जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। जैसे इंटीग्रेशन को अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो इंटीग्रेशन की आपको 11th और 12th दोनों क्लास में जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि ये कैसे सिखाती है। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन को ये कैसे सिखाती है। तो मैंने इस कोर्स पर क्लिक किया, लेसन स्टार्ट किया। जब हम लेसन स्टार्ट करते हैं तो ये मुझसे पूछता है, एक क्वेश्चन आता है मेरे सामने और ये मुझसे पूछता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो आप अपने कॉपी पेन पे इसको पहले करके देख सकते हैं अगर आपको नॉलेज है। और जब आप एक ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं, मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन चूज किया से -1, ठीक, और फिर मैं इसको चेक करता हूँ, चेक आंसर। तो ये मुझे बताता है कि आपका आंसर गलत है। अब देखते हैं कि ये होम ट्यूटर की तरह से कैसे हेल्प करेगा। I'll help you understand this integral problem. Let's break it down step by step. First, could you tell me how you would approach finding the integral of square root of a fraction like this? What do you think would be a good first step to simplify this integral? Would you try to rationalize it, or do you see any other way to rewrite it? तो अब मैं बिल्कुल एक ऐसे बच्चे की तरह बिहेव करूंगा जो जिसको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, एक एवरेज या ब्लो एवरेज बच्चे की तरह से, ठीक है। तो लेट्स सी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आई हैव जस्ट गेस्ड इट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। I understand. Instead of guessing, let's solve this systematically. Let's start with the basics. When we have a complicated fraction under a square root, one approach is to try to simplify it. Can you tell me what's the relationship between the numerator 1 minus x and denominator 1 plus x? Do you notice anything about their form? Look at the expression carefully. Does this remind you of any algebraic manipulation you've seen before? For example, what happens when you multiply both numerator and denominator by square root of 1 minus x? Well, if I multiply 1 minus x into 1 plus x, then it becomes 1 minus x square. That's a good observation. Though we're not exactly multiplying 1 minus x and 1 plus x yet. Let's look at what we actually want to do. In this case, we want to handle the square root. Let me write it in a way that might help us see better. Do you see what happened here? By multiplying both numerator and denominator by square root of 1 minus x, we got a simpler form. Now our integral becomes something different. Can you tell me what our integral looks like now? What I can see is that 1 minus x in the numerator comes out of the square root. That's all I can see. Yes, that's exactly right. The 1 minus x comes to the numerator, and under the square root we now have 1 minus x squared. This is actually a very important step. Now our integral has changed to a new form. Let me write it out. This form is much more manageable. We can actually split this into two separate integrals.
Do you see how we could split the numerator 1 minus x into two terms? Now we have two separate integrals to solve. Do you recognize the first integral? It's a standard form that appears frequently in calculus. Any ideas what this might be? I think it will be integration 0 to 1 upon under root 1 minus x squared dx. This will be the first integral. Excellent. You've identified the first integral correctly. This is actually a very special integral that gives us an inverse trigonometric function. Do you remember which inverse trigonometric function has the form of integral of 1 over square root of 1 minus x squared? This is one of the standard integration forms we learn in calculus. So for our first integral from 0 to 1, what would be the result when we apply this formula? Try to think about what sine inverse of 1 is, and what sine inverse of 0 is. Sine inverse 1 will be pi, and sine inverse 0 will be, I think, pi by 2. Let me help clarify that. Actually, sine inverse of 1 is pi by 2, or 90 degrees, and sine inverse of 0 is 0. Let's write this out. So for our first integral, when we evaluate from 0 to 1, we get pi by 2 minus 0, which equals pi by 2. Now we still need to handle the second integral. Looking back at our split integral. For the second integral with x in the numerator, we need a special substitution. Would you like to try figuring out what substitution might work here? Hint, think about what 1 minus x squared reminds you of. I think we can put 1 minus x square is equal to t square because differentiation of x square is already there, which is x. That's brilliant. Yes, we can use the substitution where t squared equals 1 minus x squared. Let's work through this substitution carefully. Now, if we differentiate both sides with respect to x, what do we get? Remember, t is now a function of x. From this, can you solve for dx in terms of dt? This will help us transform our second integral. So the second integral will become dt minus dt upon t. Let's check that carefully. From our substitution equation, when we solve for dx, we get. Also, since t squared equals 1 minus x squared, when x equals 1, what would t equal? And when x equals 0, what would t equal? This will help us determine our new limits of integration. Now, can you help me rewrite our second integral using this substitution? Remember, we're trying to transform the integral of x over square root of 1 minus x squared. So second integral will be 1 to 0 minus t dt minus dt upon t. Let's be careful with the substitution. When we make the substitution t squared equals 1 minus x squared, our second integral transforms to something simpler. Let me help you see this. So now we have both parts of our integral. Let's put them together. Does this match with any of the given options? Remember, we found this by 1. First integral gave us pi by 2 2. Second integral gave us negative 1 3. When we combine them, we get pi by 2 minus 1. Can you verify if this matches with any of the given options? Okay, so answer is pi by 2 minus 1, right?
Yes, that's correct. You've arrived at the answer through understanding each step. Let's quickly recap how we got here. Do you understand why each step was necessary? Which part of the solution do you think was most crucial in getting to the answer? This is much better than just guessing, right? Right, ma'am. I'm glad you understand it now. This problem taught us several important concepts. First, how to handle complex square root fractions by simplifying them. Second, recognizing the standard integral form for inverse sign. And finally, using clever substitutions to solve tricky integrals. Next time you encounter a similar problem, what would be your first approach? तो इस तरीके से ये वेबसाइट हेल्प करती है क्वेश्चंस को करने में, और इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस हैं वो सबके सब हैं। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और बताऊंगा इस वेबसाइट के बारे में। लेकिन इस वेबसाइट का एड्रेस है stage.kabel.me, और आप यहाँ पे जाके अपने कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।